A very good morning student. I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss another topic of reproductive health chapter, that is medical termination of pregnancy or MTPs, and this is also known as induced abortion. As you know, there are several reasons due to which the termination of pregnancy can take place if a pregnant female face any kind of accident or mechanical injury, if the pregnant female is not having the proper nutrition, or some hormonal abnormalities are there due to which the termination of pregnancy can take place. But those termination of pregnancy cannot be considered as MTPs, because the MTPs are the intentional and voluntary termination of pregnancy before the full term. जब हम जानबूझकर या अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं फुल टर्म होने से पहले, दैट इज कॉल्ड एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. द फुल टर्म, दैट मीन्स द 9th month. एज यू नो, इन ह्यूमन द प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months, and this 9th month time duration can be further divided into first, second and third trimester, and each trimester is of 3 months. First 3 months, second 3 months and the last 3 months. There is an estimate in the world around 45 to 50 million MTPs are performed per year, and this value is 1/5 of the total pregnancy that takes place throughout the world in 1 year. तो पूरे वर्ल्ड में होने वाली प्रेगनेंसी की 1/5 हिस्सा हर साल MTPs के थ्रू टर्मिनेट कर दिया जाता है. In India also in 1971 the government of India legalized the MTP, but with some restrictions, and the restrictions are there because the कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इन इंडिया इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे फीमेल चाइल्ड की बर्थ को बहुत गलत माना जाता था, एंड दैट इज़ वाई द MTPs कैन बी मिसयूज्ड इन द फीमेल फीटिसाइड, and that is an illegal thing. So that is why the MTP is legalized in India, but with some strict restriction कि इसको फीमेल फीटिसाइड में यूज़ ना किया जा सके. Now question arise, why MTPs is required? As we have discussed in some last videos, in some previous videos, there are several contraceptive methods that can be used by a fertile couple, but out of those contraceptive methods, only the surgical methods are there that ensure the complete contraception. उसके अलावा सभी contraceptive methods में थोड़ा या ज़्यादा risk factor होता है of conception, and that is why अगर contraceptive method fail होता है, so there could be a chances of conception, pregnancy, and that pregnancy is definitely, it is the unwanted pregnancy. So if the contraceptive method fails and female conceive the child, in that condition the MTP can be performed to prevent that unwanted pregnancy. There are some health states where the continuation of the pregnancy is fatal for mother, either for fetus or either for both. ऐसी कंडीशंस में भी MTP को परफॉर्म किया जाता था कि माँ की या बच्चे की या दोनों की जान बचाई जा सके. दैट मीन्स माँ की जान बचाई जा सके MTP के थ्रू. जैसे कि अगर फीमेल को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी जाती है तो फीमेल की लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है, तो इस कंडीशन में MTP को परफॉर्म लीगली करा जा सकता है. However, in India the MTP is legalized, but still there are some legal norms through which the MTP cannot be performed in an illegal manner, but still some dangerous trends related with MTP can be seen in human society. The first is because the MTP is very crucial thing. इसमें abortion के थ्रू पूरे fetus को यूट्रस से बाहर निकाला जाता है, और उस दौरान अगर थोड़ा सा भी हिस्सा fetus का फीमेल के यूट्रस में रह जाता है तो फिर वो उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. In India MTP are mainly performed by the unqualified doctors. There are some cases where the couples wants to hide their pregnancy condition, and that is why they don't go to the qualified doctor, they goes to the some unqualified practitioners, unqualified doctors, नीम और हकीम के पास चले जाते हैं, and that is why unqualified doctors के थ्रू परफॉर्म की गई MTP की वजह से फीमेल को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, and that may cause the death of the female also due to the reproductive tract infection. Second dangerous trend in India is that can be observed associated with MTP, that is the female feticide. इंडिया में क्या किया जा रहा है कि amniocentesis, as you know this test can be used for the sex determination of the developing fetus. amniocentesis परफॉर्म किया जाता है, और अगर developing fetus फीमेल मिलता है then MTP is performed to kill that female fetus. एंड इससे जो है ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस चालू हो गई, जिससे कि इंडिया में सेक्स रेशियो भी बिगड़ता जा रहा है. सो दीज आर द टू डेंजरस ट्रेंड्स दैट कैन बी सीन एसोसिएटेड विद MTP. In India the MTPs are performed with the help of unqualified doctor that may lead to the death of female, and it is also being dangerously used to promote the female feticide, and that is a legal norms are there. The doctors cannot be performed the MTP to detect the to kill the female fetus. To prevent these
these dangerous practices associated with MTP, the proper counseling is required, proper advertisement is required। और इसी वजह से आपने कभी भी अगर किसी नर्सिंग होम में आप गए हो तो आपने वहाँ देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है या कन्या भ्रूण हत्या कानून के खिलाफ है। दिस इज ड्यू टू बिकॉज MTP के साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर वो डॉक्टर्स इसको परफॉर्म करते हैं तो दे कैन बी सेंडेड टू द जेल, इम्प्रिजमेंट शुड बी देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।